right? If A and B are two non-empty sets, and if there exists a rule by which each element of set A is related to one or more elements of set B. More elements of set B, then the rule of relationship is called a correspondence set A to set B. This is known as correspondence or flow or mapping. Mapping from set A to set B. Right, mapping from set A to set B. There are two sets, obviously non-empty sets. Few elements are there and few elements are here. Right, maybe 1, 2, 3, 4, anything is going like this, right? So ऐसा कुछ flow होता है from set A to set B, right? These type of flows are known as relation or the correspondence, corresponding from A to B, right? Note down, please. Mapping means if there is an element in set A, there is an element in set B, and this associate with element of set B, right? Any element of set A having this image in set B, this is known as mapping. Mapping of this element, like let this is X to any element Y. This is called mapping. Okay, sir. Types of correspondence. Right. First, 1-to-1 correspondence. Second, many-to-one. Many-to-one. Right. Third, one-to-many correspondence. Right. ये तीन होते हैं. This means the first one, when we are saying 1-to-1 correspondence, means each and every element of set A, every element of set A, there correspond one and only one element of set B. Right? So this type of correspondence is known as 1-to-1 correspondence. Right? Second, many-to-one correspondence means one or more element of set A, one or more element of set A, obviously at least two elements, right? Of set A, there correspond only one element of set B. Right? So this is known as many-to-one, A, B, C, many हो गए, and this 1-to-1
That's a unique element in B. So this is known as many to one. One to many, right? Third one is one to many means A, B, C, D, E, right? So A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Right? At least one element of set A there correspond two or more element of set B, then this is known as one many or one to many. I guess you need time to note. जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि we have to understand the function, right? So what's this function? See, right? Function. First, let F denotes a rule of correspondence by which every element of set A there correspond one and only one element of set B, right? Then this type of association is called function. अभी समझाता हूं क्या होगा ये. Note down please. Let this is a set A and this is a set B. So these are non-empty set and the correspondence or the relation that's going on for function F, right? Let non-empty set, we are just giving A, B, C, D, E few elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Few elements in set B, right? Now, each and every element of set A has unique image in set B, right? Associate with B के लिए 1 है, A के लिए भी 1 possible है, C के लिए कोई भी 3 है, 2 नहीं जा रहा है, D के लिए 4 है, E के लिए 5 है. तो सेट A में जितने एलिमेंट हैं वो एसोसिएट अपने तरीके से हो रहे हैं. सेट A से कोई भी ऐसा करस्पॉन्ड नहीं हो रहा है जिसमें for A we are getting 2 values, for B we are getting 2 values, or there isn't any value for the element of set A, right? मतलब अगर मैं ये कहूं कि this is the function and बहुत सारे केसेस हो सकते हैं फंक्शन के, तो फंक्शन नहीं होने के क्या केस होंगे उसे देखना. This is for not a function, right? First case, set A, set B, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Maybe there is at least one element is there that having 2 image or 2 correspondence. So this is not a function, right? First case. Second case, when we are saying A to B, flow from A to B as a function F, right? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, and one element is there that not taking part in any association. So this is not a function, as well as due to this element A, this is not the function, right? Due to A, the first condition is not a function, and due to E, the second condition is not a function. So when this association will not a function, so
if any element in set A having two mapping in set B, not a function, or any element in set A having no image in set B, not a function. Note down, please. So through the mapping, we can say like how to write down y is equal to fx is a function, right? This we can write or read as y is equal to fx, x is the function, right? The corresponding to f, and y is the function of x. And this we will read as f is such that a to b. This is read as f is, ये जो semicolon है, this is f is such that a to b. This a is for set A and B is for set B. Element of set A, right? Element of set B. F is such that A to B, flow from correspondence from A to B. Elements of set A is known as domain. Elements of set B is known as codomain. ये range नहीं होता ना? Element of set A is known as domain. Elements of set B is known as codomain, right? F is such that A to B. Like if I'm giving y is equals to x plus 2 or fx is equals to x plus 2, f is such that n to n. So we'll read this, or through the mapping we can see this. This is set A. This is set B. Flow is called f, the function. Set A contains all the natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, all the natural number. Again, set B contain all the natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and all this, right? See, for 1 we are getting 3. So correspondence, 1 is mapping with 3, 2 for 4, 3 for 5, 4 for 6, 5 for 7, 6 for 8, 7 for 9, and so on, right? So each and every element of set A correspond to set B, and जो दोनों condition थे उनमें से कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है. So this is a function. See, so elements of set A is called domain. Elements of set B is known as codomain. And the association, जितने association में take part किए हैं, the elements of set B, those are involved in the mapping. Elements of set B, those are involved in the set B, is known as range, right? Means for this case, range is 3, 4, 5, 6, ... But the codomain is 1, 2, 3, ... Domain is natural number given and codomain is given. All those elements in set B that's involved in the mapping is known as the range, if this is a function. Is it okay to everyone? So now I'm giving you few questions. You have to see those are function or not, and please write down in my chat, right? Y is equal to x minus 2 f of n to n. First question. Second is y is equal to x square f of I to n. Third question, y is equal to x square f of I to w. एक ही चीज written रहे फिर भी वो गलत हो सकते हैं, so careful. See, first one, अभी देख लेता बेटा. First one, A to B, right? This 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. When we are putting 1, I'm not getting anything there, right? Minus 1, right? When we are putting 2, I'm not getting anything, but 3 say I'm getting everywhere, right? So two elements are there, which is not following my conditions, right? ये फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग, और सेकंड वाले को, तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाले को फॉलो कर रहा है कि सेकंड में आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू और नो मैपिंग इज देयर. सो फर्स्ट वन इज नॉट अ फंक्शन, राइट? को पता सेकंड वन?
right? A to B, it's integer -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, and so on. And it's given natural number. Natural number means 1, 2, 3, 4, 5. So one element is there, that is 0. We are not getting anything for this, but for -1 and 1, we are getting the same. For 1, 2, 3, 4, 2, I'm getting 4, 3, I'm getting 9, and so on. But there is a point, right? 0, there we are not getting anything. So again, this is not a function, right? Coming to the third one, right? It's going for the whole number, so it's includes 0 also, so it's going to be 0 now. So now each and every elements are mapping, and no element in set A having two image in set B. So third one is the function, right? Everyone? Yes, sir. Now, very good, very good. काफी लोग का आंसर आ गया था. Now, so now in this function, the next part is when we understand this key, like f a to b and y is equal to fx, the role of all this thing means set a is a set that's called the domain, b is for codomain, and through y is equal to fx is given. So this we can find range, right? ये तीनों के अपने important role हैं. कोडोमेन निकालने को आपको बोलेगा नहीं, कोडोमेन विल बी गिवन, राइट? कोडोमेन गिवन रहेगा, बट डोमेन निकालने की बात होगी एंड रेंज निकालने की बात होगी. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन. One by one we'll go for that, right? First we'll go for how to find domain of the function. And see, it's a very 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 interesting topic. बहुत सारे पुरानी चीजें जो पढ़ी हुई है वो आ जाएगी, और बहुत सारी नई चीजें पढ़ने को भी मिलने वाली है. सो बी केयरफुल, राइट? फर्स्ट, if y is equal to under root of fx is given, right? So fx must be greater than equal to 0. We know that under root of negative quantity does not exist. Under root of negative quantity does not exist. So fx must be greater than equal to 0, right? And second thing, if y is equal to 1 by fx given, we know that fx must not be equal to 0, right? Fx must not be equal to 0 because 1 upon 0 is not defined, right? So fx must not be equal to 0. If fx will be 0, again will be in this condition, right? If one value is there, we are not getting any value, right? So again, this will go there, right? Third, if y is equal to log fx base gx is given, so fx must be greater than 0, gx must be greater than 0, and gx must not be equal to 1. All the three things, right? Fx greater than 0, gx greater than 0, and gx not equal to 1, right? Please note down carefully. Suppose we are starting with the simple thing when we have to find a domain. Under root of mod x minus 1 into e to the power x minus 1 upon x square minus 5x plus 6. Right? A simple question, starting with a simple question of this: find domain of this. Right? Only two questions. Take your time. Maximum 3 minutes.
open, close, union, 1 to 2, 1 is closed and 2 is open. Now, very good, very good. काफी लोगों का सही है, very good. Right, and directly we are getting right. But see the second one. This is clear to everyone now. The first one. I'm waiting for answer. Now everyone now. Right, now see the second one. What you have to do and what is problem in this, right? Okay, let's see. Dhyan se. See. This will be 0 at -2 and +2. This will be 0 at -1 and +1. This will be 0 at 2. And this is 0 at -1. Right? So 2 is coming 2 times, -1 is coming 2 times, 1 and -2 is coming only 1 time, right? If you are putting any value greater than 2, right, everything is coming as negative. So I'll start with negative, but exactly at 2, this having 2 power or getting cancelled, so I can say keep not changing the sign, so it will be negative in this way, right? Then positive, only 1 power, then again positive, then it's going to negative. I guess clear to everyone. If getting 2 power, so a square of anything not change the sign, but if having odd power, power 1 or 3 or 5, so it will change the sign. So accordingly this is going, and what we required, we need the positive or 0. So we have to take careful, like if anywhere it's coming exactly 0, that's also included in the number line. So -2 to -1, right? -2 is in the numerator and -1 denominator, union -1 to 1, 1 in the numerator, right? And think on 2, right? -2, 1, 1, and think on 2. Exactly at 2, this will be 1 by 0. So we have not to include this thing. So our answer is -2 to -1 and -1 to 1. Or we can also write this as -2 to 1, right? Excluding -1. Also, you can write something like this. So, if functions are given as f1x plus f2x minus f3x or into division or anything in this operation, these are given, right? Let the domain of first one is D1, second is D2, third is D3, and last is Dn. And we have to find domain of the complete function. So this will be D1 intersection D2 intersection D3 up to intersection Dn, right? This is called domain D, right? This is called domain D, right? So when you have to find domain of the function, if functions are given, function बहुत तरह से plus minus के form में given रहेंगे, like f plus g means fx plus gx. Second, f minus g is fx minus gx. F into g means fx into gx. Third, f by g means fx upon gx. Fourth, fog means fogx. fogx, right? ये फंक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? f1x, f2x, f3x, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस आपको रहेंगे, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में. एंड फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड डोमेन ऑफ ईच एंड एवरीवन. फाइंड डोमेन ऑफ ईच एंड एवरीवन. जितने भी हैं सबके मैंने डोमेन निकाल लिए. सबके जब डोमेन निकल के आ गए, तो नाउ यू आर टेकिंग द इंटरसेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? जो सभी में कॉमन है वही मेरा आंसर होगा. जो सभी में कॉमन है वही मेरा आंसर होगा, राइट? नोट डाउन प्लीज. सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, अंडर रूट ऑफ x minus 4 plus under root of 6 minus x, right? So see the domain of first function. So we know that x minus 4 must be greater than equal to 0 and 6 minus x must be greater than equal to 0. From this I am getting
4 to infinity, right? From this I'm getting x less than 6, so minus infinity to 6. Now merge both this, so what I'm getting, this 4 to infinity, right, for first one, and for second one it's minus infinity to 6, right? What is the common portion we can see there, right? It's 4 to 6, दोनों जो शेडेड पोर्शन है वही मेरा आंसर होगा, सो आंसर विल बी 4 to 6 only. Is it okay? Only 3 questions. Maximum, say mod x minus 1 greater than equal to 0, 2 minus mod x greater than equal to 0, right? From first I'm getting minus 1 to plus 1 के बाहर जाएगा, right? From second I'm getting कि minus 2 and plus 2 के अंदर जाएगा, right? This is coming minus 2 to minus 1, union 1 to 2. Is it okay? Yes, sir. पहला का D1, दूसरे का D2 और दोनों को मर्ज कर दिया। I guess सभी का ये सही होगा। Close and open interval plays very important role, so be careful, right? Third one. नहीं, वहां और भी बहुत होंगे बेटा, अभी तो हमने ढंग के क्वेश्चन अभी शुरू नहीं किए हैं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये थर्ड क्वेश्चन इज वेरी 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 गुड, राइट? एंड इसमें गलत होने के चांस भी बहुत अधिक होंगे। तो आई गेस सभी ने ये अटेम्प्ट कर लिया है। मैं स्टार्ट करूं थर्ड क्वेश्चन? ओके, राइट? ओके एवरीवन, चल देखता हूं। इसके साथ भी कुछ फंक्शन था क्या प्लस में? यही था? हाँ सर। क्या था? प्लस में तो अंडर रूट ऑफ 4 minus x square। राइट, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर से एक तो बहुत अच्छी बात आ गई कि ये -2 से +2 के बीच में ही मेरे को आंसर चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा वो देखता हूँ, राइट? सी, ये जो गिवन मेरे पास है, राइट, साइन पाई एक्स, तो साइन थीटा, अभी तुरंत हमने देखा था कि साइन दिस पाई एक्स लाइज बिटवीन 0 to pi for the first interval, and we can add 2n pi for another interval. So this is coming as sine pi x lies between 2 and 2n plus 1, right? 2n to 2n plus 1. देखना कितना माइन्यूट दिक्कत होता है और कैसे प्रॉब्लम आपको गलती करवाता है, देखना, राइट? सी, तो 2n to 2n plus 1 इसके बीच में वेरी कर रहा है, राइट? अब n is equal to, and we know that कि sin थीटा की कभी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, उससे बाहर जा नहीं सकती। सो फर्स्ट केस फॉर n is equal to 0 साफ दिखाई दे रहा है, दिस विल बी 0 to 1, तो sin pi x lies between 0 to 1। एक मुझे ये सॉल्व करना है, रखता हूँ। फिर n is equal to 1 रखूंगा तो ये 2 से 3 चला गया, तो sin थीटा तो कभी वहां जाएगा ही नहीं, भूल जाऊं उसे। लेकिन -1 पुट करने पर ये जा रहा है -2 to -1, एंड ऑब्वियसली ये -1 पर एक फंसेगा, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 भी जो है वो भी सॉल्व होने जा रही होगी, सॉल्व होने को जाएगा ये। इज इट ओके, राइट? अब फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर मैं देखूं तो साइन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 0 to 1 साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ये यही ग्राफ जाता है,
0 to 1 का मतलब कभी 0 to pi by 2 मत सोचना, 0 का 1 मतलब है दिस लाइज बिटवीन 0 to pi, राइट। तो यहाँ पर sin pi x 0 to 1 है, मीन्स pi x लाइज बिटवीन 0 to pi, 2n pi ऐड करना ना भूले, 2k pi 2n pi जो भी मन करे। तो x की वैल्यू मेरे पास आई 2n to 2n plus 1, राइट। लेकिन ये मैं 0 रखूंगा तो ये 0 to 1 आ गया, राइट। एक है सॉल्यूशन मेरे पास ना। मैं 1 रखूंगा तो ये 2 से 3 आ गया, ये -1 रखूंगा तो दिस इज -2 to -1 आ गया, राइट। -2 रखूंगा तो -4 से -3, एंड इसके बाहर है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है -2 to -1 एंड 0 to 1 इंक्लूडिंग 2, राइट। इतना तक आंसर आने के बाद भी मेरा एक जगह पर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? केयरफुल, राइट। गलती यहाँ पर हो गई कि साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 थी, मतलब पाई एक्स की वैल्यू होगी -π/2, राइट। -π/2 और उसमें मुझे 2n पाई भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 2n -12, 2n -12। ये इतने प्यारे क्वेश्चन है ये सब ना कि मैं मतलब अब से 1-2 महीने के बाद योर थॉट प्रोसेस विल बी टोटली चेंज। ये कैलकुलस का जो ये शुरुआत होता है ना, ये थॉट प्रोसेस को, क्वेश्चन करने के प्रोसेस को ही चेंज कर देगा पूरा, कि एवरी टाइम यू हैव टू बी अटेंटिव कि अब कहां पर होगा। और इतने फास्ट दिमाग चलना शुरू हो जाता है ना, लाइक n = 0 रखा तो -12, राइट, एक वैल्यू है। n = -1 रखा तो -2 -12 बाहर चला गया, छोड़ दो। n = 1 रखा तो 2 -12, राइट, 3/2। n = 2 रखा तो बाहर चला गया, छोड़ दो। ये सब वैल्यूज हैं, वो भी मेरे को इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं, जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 to -1 है, 0 to 1 है, यहाँ से केवल और केवल 2 है, -12 भी है, 3/2 भी है। तो इतने वैल्यूज के साथ, मतलब -2 to -1, 0 to 1, and including 3 values, -12, 2 and 3/2. Is it okay, everyone? Very good. Sir, Okay. Yes. sir, आपने pi x is greater than equal to 0, greater than equal to 2 and less than equal to 0 किया था, वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है। कहाँ पर बेटा, कहाँ है ये? सर आपने जो रेड में लिखा है अबव ब्लू वाला। हाँ, ये वाले, यहाँ पर ये। हाँ सर। This one. हाँ। This one. See. Understand this thing, na? Like, I'm saying कि sin theta lies between 0 to 1. What do you understand with this, right? So, for understanding this, we'll go for graph, right? Draw the graph of sin x. Right? 0, pi, 2 pi, 3 pi. This is the point 1, 0,1, and this is -1. We required sin theta lying between 0 to 1. So 0 to 1, when this is lying between 0 to 1, so these are the portion, right? This is not the portion, these are the portion, right? फिर नीचे चल गया, these are the portion. यही portion है जो 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे, right? 0 से 1 तक जाएगा फिर, right? It's going. Is it okay? Is it okay? So Corresponding to this sin theta, it's going from 0 to pi, then 2 pi to 3 pi, then अगेन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, या पीछे जा रहे हो तो ये पोर्शन होंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं उतनी अधिक बात नहीं करके मैं बोल रहा हूँ थीटा को फर्स्ट टाइम 0 से 2 पाई के लिए, व्हाट आई एम सेइंग कि थीटा मस्ट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई के बीच में, इट मस्ट लाइज बिटवीन 0 to पाई। व्हाई? बिकॉज साइन थीटा मस्ट बी 0 to 1, 0 to 1 होने के लिए 0 to पाई के बीच में लाई करेगा। इज इट ओके? It's okay? yes sir. But now this is not the complete solution, because sin theta में theta की वैल्यू -∞ to +∞ पूरे जा रही है, right?
तो ये तो मैंने केवल 0 से 2 पाई में किया, एंड वी नो दैट sin थीटा इज पीरियोडिक फॉर 2 पाई. So if I'll add 2 pi to n pi both sides, right? So theta lies between 2n pi to 2n plus 1 pi. लेकिन थीटा की जगह ही अगर मैंने पाई एक्स किया होता तो पाई एक्स करने पर पाई कैंसिल होके ये 2n2 2n plus 1 चला जाता. Is it okay? हाँ सर. Note down please. ओके सर, थैंक यू. हाँ सर. तीन कंडीशन हमने रखे थे. गो टू द प्रीवियस थिंग, राइट? तीन कंडीशन हमने रखे थे हाँ लॉग के लिए ना, log fx बेस gx, राइट? इनइक्वालिटी भी सॉल्व करने हैं, तो टेक योर टाइम, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. अगर स्ट्रगल होता है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको कोशिश करनी है. नहीं, बहुत सारे कंडीशंस अभी लगेंगे, उसमें अप्लाई होंगे. यस, बट अगर कंडीशन ही पहले से गिवन है ना 2 3 4 5, लेकिन फिर भी कंडीशंस पे यू हैव टू सी ना. आराम से ना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी डिस्कस करते हैं, पहले ट्राई कर लो आप.
वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ गया। यस, आओ शुरू करते हैं ना। सी फर्स्ट वन, राइट, इट्स बेटर टू गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इस लॉग के अंदर ये x है, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये लॉग के अंदर ये पूरा है, तो लॉग x विद अ बेस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0, दैट इज 1। इस लॉग के अंदर ये पूरा है, तो लॉग बेस 3 लॉग बेस 4 x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो पहले ये 3 ट्रांसफर होगा, तो दिस इज log x with a base 4 greater than 1 and x greater than 4। ये 4 से ग्रेटर आ गया, राइट, ये 1 से ग्रेटर आ गया और ये 0 से आ गया। तीनों को कंबाइन करूं तो मैं बोलूंगा 4 टू इन्फिनिटी की बात हो रही है। ओपन तो दोनों होंगे, आई गेस सभी का सही होना चाहिए। अगर वैल्यूज बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, वो ट्रांसफर करते हैं, तो इनइक्वलिटी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट if the base is lying between 0 to 1 and we are transferring, then obviously the inequality sign will be changed, right? पूरी तरह से change हो जाएगी, right? Now for the second one, it's okay everyone? Good, good, good. सर आप एक बार log 3 को कैसे ट्रांसपोज किया वो बताओ ना। log 3 को बेटा इसे मैं सॉरी log 3 में ये वाला चीज ना यहाँ चला जाता है, अगर ये यहाँ जाएगा तो वो 3 टू द पावर 0 हो जाता है, 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर 4 यहाँ चला जाता है, 4 यहाँ गया तो 4 टू द पावर 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो x ग्रेटर देन 4 हो गया। ओके सर, और log 2 भी होगा ना फिर? log 2 नहीं होगा ना बेटा, log के अंदर जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, उसके बाहर तो कुछ और ऑपरेशन है ही नहीं। log 2 भी दिया है ना। क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, log यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। उसके अंदर जो फंक्शन है log के लिए प्रॉपर्टी ये है कि log fx जब होगा तो fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, तो fx तो ये पूरा है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके सर, समझा। राइट, सेकंड वन मैं रब करूं इसे, सेकंड में भी ऐसे ही कुछ कहानी बनेगी, राइट, इन डिफरेंट वे। सी फर्स्ट x greater than 0, second log x with a base 4 greater than 0, so x greater than 1, 4 to the power 0 is 1, right। पहले ये log के अंदर ये था, ये greater than 0, इस log के अंदर ये पूरा था greater than 0, इस log के अंदर ये पूरा greater than 0 means log base 1/3 log 4x must be greater than 0, right। तो ये 1/3 को जब मैं ट्रांसफर करूंगा, ये 1/3 टू द पावर 0 जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, बट ये इनइक्विटी साइन चेंज हो जाएगी, बचेगा log विद अ बेस 4 x मस्ट बी लेस देन 1, एंड इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो x लेस देन 4, x लेस देन 4 यहाँ से आ रहा है, x ग्रेटर देन 1 यहाँ से आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 पहले से था। ये तीनों को मैं मर्ज करूंगा, आई कैन से 1 to 4 is the answer. ओके, एंड मजेदार होगा थर्ड वन, कैसे ये देखो।
काफी सारी नई चीजें आ जाती है इसमें ना, केयरफुल रहना, चीजों को समझते जाना है। अभी और भी चीजें आएंगी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे तब, राइट। क्या क्या कंडीशन है ये देखो, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, ये पूरा log x विथ बेस 1/3 ग्रेटर देन 0, देन अंडर रूट के अंदर की ये पूरी क्वांटिटी log बेस 2 log बेस 1/3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीन होगा मेरे पास। सेकंड वाले की बात मैं करूं तो मैं बोलूंगा ये 1/3 को जब मैं यहां ले गया तो x लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट वाले से था, सेकंड वाले में x लेस देन 1 हो गया। यहाँ पर बात करें तो 2 टू द पावर 0 होगा, वो 1 हो गया। log बेस 1/3 x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 0 1, 1/3 को ले जाऊंगा 1/3 टू द पावर 1 एंड इनइक्वलिटी साइन भी चेंज हुई, ये आ गया, राइट। तो x ग्रेटर देन 0 एक मेरे पास आया था, राइट। सेकंड आया x लेस देन 1, थर्ड आया x लेस देन इक्वल टू 1/3। अब ये तीनों को मर्ज करने पर व्हाट आंसर आई एम गेटिंग, 0 to 1/3। ध्यान देना 1/3 पर क्लोज है, 0 पर ओपन है, राइट। यस सर। तो बड़े सिंपल से सोबर तरीके से चलने की बात है ना, तो धीरे धीरे करते करते you'll get the answers, right। ये एक वैरायटी और वेरिएशन हमारे लिए, राइट। आगे बढ़ सकता हूं, यस सर। नेक्स्ट। एवरीवन केयरफुल, क्वेश्चन में वेरिएशन आ रहा है अब, हाँ ध्यान से। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साथ में यूज किया हूं तो ध्यान रखना क्वेश्चन में वैसे ही थोड़ी ब्यूटी बढ़ जाती है। लास्ट का आंसर था 0 to 1/3 आई गेस, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन रखता हूं लेकिन ये तीन क्वेश्चन ही काफी अच्छे जाएंगे, राइट। दोनों 1/3 पर क्लोज, 0 पर ओपन, राइट। तीन क्वेश्चन है और तीनों बहुत अच्छे जाएंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं इसके लिए थोड़ा अधिक टाइम दे रहा हूं आपको, मैं 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, बट पहला नहीं होता दूसरे पर जाओ, जो भी कंडीशन लगा सकते हो आप लगाएं। क्वेश्चन में है ये जो गिवन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये गिवन है ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये गिवन है ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। एंड इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो दो हमारे पास गिवन है वैल्यूज यहाँ पर, राइट, उसको हमें डील करना है विथ 6, राइट। ये पूरा 1 में है। साइन इनवर्स के अंदर ये पूरी चीजें जो दी हुई है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ये अंडर रूट गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एंड ये मॉड एक्स गिवन, यहाँ पर भी ये मॉड में है ये भी मॉड में है, राइट। क्वेश्चन में कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ओके लेट्स स्टार्ट। ओके अभी देखते हो बेटा, first we know that it's within the under root, so we can write this as mod x minus 1 is in the greatest integer minus 5 greater than 0 not equal to 0, right। इक्वलिटी साइन नहीं ले सकता क्योंकि नीचे की क्वांटिटी अगर 0 ही तो 1/0 is not defined,
mod x minus 1 is in the greatest integer greater than 5 and greatest integer की property होती है अगर ये integer है so we can write this greatest integer minus 1 greater than 5 or mod x is in the greatest integer greater than 6 अगर ये quantity greater than 6 जा रही है तो 100% greatest integer mod x greater than 6, right? And greater than mod 6 means we can say mod x greater than equal to 7. 7 या 7 से ऊपर mod x होगा तो it will never be equal to 6 और greatest integer है तो this must be integer, right? So mod x greater than equal to 7, so we can write minus infinity to minus 7 union 7 to infinity. First one. See the second one. Sine inverse of this thing, right? Greatest integer of 3 minus 4x square lies between minus 1 to plus 1. So we know that if any quantity sine inverse or something greatest integer lies between minus 1 to plus 1, so right, we can, in this case, we can say that this 3 minus 4x square की lower value will be minus 1 and greatest value will be 2 but not equals to 2. Because अगर minus 1 से छोटी values मैं रखता हूं तो that will goes to minus 2. But यहाँ पर मैं अगर 1 से 2 के बीच की कोई भी values रख रहा हूं तो this will go to 2. Right? ये 2 को satisfy करेगा but वो minus 2 को उस तरफ जा रहा है. Right? So now one by one I have to solve both the portion. This one एक तरफ इसे solve करता हूँ, एक तरफ इसे solve करता हूँ, right? See, so 4x square less than equal to 4 or x square less than equal to 1, or we know that this means minus 1 to plus 1 के बीच में आ गई quantity, right? From this what I am getting, right? 4x square greater than 1 or x square minus 1 by 4 greater than 0. यहाँ से आ गई मेरे पास minus half और plus half के बाहर जितने भी हो सकते हैं possibility वो है. दोनों को merge मैं करूं तो I'm getting minus 1 to minus half and half to 1, right? Is it okay? Minus 1 to minus half and half to 1. Please note down everyone. In this case, greatest integer of x minus 1 is in the mod plus 7 minus x or x minus 1 x minus 7 is the same thing. Mod is equal to 6 is not a solution. मैं पहले ये करता हूं कि इक्वल टू 6 के लिए कब कब ये पॉसिबिलिटी है वो निकाल लेता हूं एंड जब ये पूरी चीजें मेरे पास आ जाएगी तो अकॉर्डिंगली विल चेंज कि ये कब नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट विल गो विथ कि कब कब ये पॉसिबिलिटी हो रही है और कब ये होगा, राइट? सो इक्वल टू 6. सो मॉड विथ 1 एंड मॉड विथ 7, सो वी कैन से दिस इज 1 and 7, case first greater than 7. Case first greater than 7, right? Right, greater than 7. So this will be x minus 1 ka mod plus x minus 7 ka mod greatest integer is equal to 6. So greatest integer x 2 times and 7 and 1 8 is equal to 40. So greatest integer x is equal to 7 or x lies between 7 to 8. So ये values मेरी नहीं होनी चाहिए, right? जो मेरे पास first आया वो ये आया कि this
lies between 7 to 8 is not required, right? Case 2. When we are saying x lies between 1 to 7, right? Not including 7, right? Right? Now, if lying between 1 to 7, we know that this will be x minus 1 integer only, greatest integer, and this will be 7 minus x is in the greatest integer only is equal to 6. Or this is x greatest integer minus 1 plus 7 plus minus x is in the greatest integer is equal to 6. So both sides cancelling out, or greatest integer x is equals to greatest integer x plus greatest integer of minus x is equal to 0. Look, ये बड़ा अच्छा सीलिंग फंक्शन जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया. ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर gif ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0. सी, अगर मैं x को इंटीजर ले रहा हूं तो इंटीजर माइनस इंटीजर दोनों कैंसिल आउट होकर 0 होंगे. बट इफ x इज नॉट एन इंटीजर, 1.2 लिया तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 और माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2, तो वो 0 नहीं होगा. मींस x मस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर. और x बिलोंग्स टू इंटीजर कहां से कहां तक में? x बिलोंग्स टू इंटीजर 1 से लेके 7 तक के बीच में मेरे पास हो. मतलब कितनी डिस्क्रीट वैल्यू हुई? 1 2 3 अप टू 7. 7 वैसे भी पहले निकाल चुका, तो ये वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए, राइट? केस थर्ड, when we are saying कि x less than 1, this will be 1 plus 7 plus twice of greatest integer minus x is equal to 6, or twice of greatest integer minus x is equal to -2, cancelling out, this is -1. This we are writing 1 minus greatest integer x, 7 minus greatest integer x. So 1 and plus this will be 8 minus 2 to cancel out to -1. And we know that if this lying between -1, so minus x lies between -1 to 0. Multiplying with minus sign, I'm getting 0 to 1, right? But 0 to 1 पे भी नहीं होना चाहिए. तो कहाँ कहाँ नहीं होने चाहिए? 0 to 1 is not possible. First, 0 to 1 is not possible, right? 7 to 8 is not possible, right? And 1 to 7 is not possible. इतने जगह पर नहीं होने चाहिए. So we can write the answer as R minus 0 to 1 union 7 to 8 union 2 3 4 5 6. This is our answer. बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं आंसर लिखने के, but easiest way में this we are writing as 3 questions, right? 9 minutes for these 3 questions. Maximum time जो लगेगा फर्स्ट पर लगेगा, सेकंड पे उससे कम टाइम लगेगा, थर्ड very simple question, right? But overall I'm giving you 9 minutes. Sir, हाँ, समझ में आया ये? तो ना अगर समझने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, तो साथ साथ में करें एक बार. ये log base 2 था तो log a माइनस log b लगाया तो log a by b हुआ तो ये क्वांटिटी आ गई मेरी, राइट? log 2 के साथ में ये पूरा हो गया. फिर पुराने क्वेश्चन जो किया था वही हो गया. log के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर ये है ग्रेटर देन 0, इसके अंदर ये पूरा है ग्रेटर देन 0, इसके अंदर ये पूरा है ग्रेटर देन 0.
मैं बोला कि अब इसे क्यों सॉल्व करूं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया तो 1 से ग्रेटर होगा तो वो 2 से ग्रेटर होगा तो होगा ही होगा। तो सबसे एक्सट्रीम केस मेरा 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसे ही सॉल्व करता हूँ, राइट। तो उसे सॉल्व करने के लिए और x ग्रेटर देन हाफ है, तो सभी चीजों को मैं हटाता हूँ और यूज करता हूँ राइट। देखते हैं ये क्या होता है। बहुत सारी नई चीजें आज रहा है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से पूरे को आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये गया 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 ग्रेटर देन लेस देन x square minus 2x plus 3. So this is 7x square minus 7x minus 6x minus 1 less than 0. तो अब यहाँ से तो साफ दिखाई दे रही है एक चीज, क्या ये दिखाई दे रहा है कि x is equal to 1 पर तो ये 0 है ही, x is equal to 1 पर 0 है और एक 1/7, राइट। x plus 1 by ठीक है ना, ये लेस देन 0 मतलब ये हो गया -1/7 से 1 तक, लेकिन पहले ही हमने देखा था x ग्रेटर देन हाफ था, तो हाफ से 1 तक का मेरा आंसर जाएगा। बस सॉल्विंग 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 एंड आसानी से आंसर। बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन। अब इसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दे दिया, स्क्वायरिंग भी हो गई, अंडर रूट भी आ गए, एंड पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप में थोड़ा दिक्कत का काम है, बट वेरी गुड अदर्स, वेरी गुड। सब मैं अच्छा ट्राई दोनों का। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छा तरीका क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होना चाहिए, राइट। सबसे अच्छा तरीका आपको बेस्ट हो सकता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने प्लॉट किया, right, this is the graph, this is origin, this is 2, 0, this is minus 2, 0, this is 0, 4, right. Now graph of greatest integer x, that this is 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 0 से 1 पर ये जाएगा, right. 1 से 2 में कहीं ये जाएगा, 2 से 3 में कहीं ये जाएगा, राइट। एंड -1 से 0 में यहाँ जाएगा, एंड यहाँ पर ये कहीं यहाँ जाएगा, राइट। मुझे दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिख रही है। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि ये 2 से 3 के बीच में एक जगह पर कट कर रहा होगा, और एक ये दिखाई दे रहा है कि ये -2 से -1 के बीच में एक जगह पर कट कर रहा होगा, राइट। अब ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पर ये कट कर रहा होगा, ऑब्वियसली ये स्टेप फंक्शन है, राइट, अपना ठीक है, स्टेप फंक्शन पे अपना ये बना हुआ, राइट। सो अब इफ वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पर ये कट कर रहा होगा, तो ये 2 से 3 के बीच में कहीं पर कट कर रहा होगा। अगर 2 से 3 के बीच में कट कर रहा है तो ये दोनों वैल्यूज को इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर 2 से 3 मैंने एज्यूम किया तो 100% ये वाली वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 6। क्योंकि मैं प्लस ले रहा हूँ तो आई एम सेइंग कि दिस इज रूट 6 ओनली। ये जो पॉइंट आ रहा है वो रूट 6 का पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली, राइट, सिमिलरली मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ -1 से -2 के बीच में, तो -1 से -2 में अगर एज्यूम करूंगा तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक्स स्क्वायर -4 जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी, व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन -1 to -2, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू -√2। -√2 भी इसके बीच में ही लाई करता है,
मतलब जो यहाँ पर हमने एज्यूम किया था वो भी सही एज्यूम किया था हमने, -√2 और 1 की। अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ही क्वांटिटी ऐसी है जहां पर ये कट कर रहा, यहाँ कट कर रहा, उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली क्वांटिटी जो है ये जो क्वांटिटी है ये ऊपर है। इसके अलावा हमेशा x² - 4 ही ऊपर है। तो x² - 4 कहाँ से कहाँ तक ऊपर है? √6 से लेके इंफिनिटी तक। इक्वलिटी भी रखनी है और -∞ से लेके -√2। इज इट ओके? सर यस। सर आपने वो लास्ट में क्या किया? कहाँ पर बेटा? सर ये जो आपने √6 to infinity लिखा उसके पहले आप कुछ बोल रहे थे वो नहीं समझ। वो मैंने ये बोला कि कौन सा ग्राफ, जो x² - 4 का ग्राफ जो है, x² - 4 का जो ग्राफ है वो कब ऊपर है ग्रेटेस्ट इंटीजर से? तो रेड वाला जो पोर्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और ब्लैक जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ है x² - 4 का। तो x² - 4 कब ऊपर है रेड वाले पोर्शन से? तो √6 के आगे की वैल्यूज के लिए वो ग्राफ ऊपर बन रहा है नया, एंड -√2 से नीचे के लिए वो ग्राफ नीचे बनता जा रहा है।